अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद वड़ाइच आपकी खिदमत में एक नया एपिसोड लेकर हाज़िर हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे लंदन ऑन्टारियो में जो एक इंसिडेंट हुआ है, उसकी पूरी ही कम्युनिटी जो है उसको कंडोल कर रही है और उसके मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी विजिल्स हो रही हैं। आपने देखा कि यहाँ पे लंदन ऑन्टारियो में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर्स ऑफ अपोजिशन पार्टी जो हैं और दूसरे बहुत ही अहम मेंबर्स जो हैं उन्होंने शिरकत की है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वहाँ पे जमा हुई थी। नाज़रीन, इस तरह की विजिल्स आप हमारे पूरे कनाडा में मुख्तलिफ प्रोविंसेस में देख रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे उसको देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। लेकिन एक जो अंडरलाइन बात है वो ये है कि यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका एंगर टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है और इसी की एक कड़ी यहाँ के वैंकूवर की जो दो विजिल्स हुई हैं उसमें भी देखने को मिली और हमने उसको कवर किया। नाज़रीन, अभी आपको हम उनकी उस विजिल्स की दोनों को जो एक वैंकूवर में हुई और एक सरी में हुई उनकी हम आपको हाईलाइट्स दिखाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको हाईलाइट्स की तरफ लेके जाएं, मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा। नाज़रीन, जब आप वॉक करने के लिए बाहर जाएं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा कि आप कौन सी समत में चल रहे हैं। हमेशा अपोजिट समत में चलें जहाँ से आपको दिख रहा हो कि गाड़ी सामने से आ रही है। साइड वॉक चूज़ करें तो ये हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपके सामने से गाड़ियाँ आ रही हों और आपको वो दिख रही हों। उसके मुतज़ाद साइड पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको पता नहीं होता कि कौन पीछे से आ रहा है। ये एक टिप है जो हम आपके साथ छोड़ते जाएंगे। जी नाज़रीन, आइए हम आपको लिए चलते हैं वैंकूवर और सरी की जानब। आप देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जो एक्सप्रेशंस हैं लोगों के, लगता है ऐसे ही है कि वो गवर्नमेंट से नालां हैं, पॉलिटिकल लीडर से नालां हैं और एक जगह तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर मौजूद भी थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल सका कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ये एक कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा एंगर देखने को मिला है। आइए देखते हैं कि ये हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
سے پہلے تو جی اٹس اے سیڈ ڈے، بڑے افسوس کی بات ہے 3 جنریشن ایک ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت اس دنیا سے کوچ کر دی. پرائم منسٹر آف کینیڈا نے اس کو ٹیررسٹ ایکٹ ڈکلیئر کیا. پرائم منسٹر آف پاکستان اسلامک فوبیا پہ کب سے ہاپ کر رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک کینسر ہے، ایک موذی مرض ہے جو کہ انسانیت کی جڑوں میں جسٹ لائک اینٹی سیمیٹسزم کی طرح جاتا جا رہا ہے، اینڈ دس نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہمارے ہائی کمشنر صاحب نے کونسل جنرل ٹورانٹو کو امیڈیٹلی انسٹرکشن دی کہ وہ موقع واردات پہ پہنچے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب اب بھی اس سچویشن کو آبزرو کر رہے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے اوپر ایک المناک سانحہ گزرا ہے، یہ مسلمانوں پہ ایک المناک سانحہ ہے. اس خوبصورت ملک کینیڈا میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کے علم بردار مانے جاتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہوا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اور کینیڈین لیڈرشپ اپنی ٹرو جگہ لیتے ہوئے کمیٹی آف نیشنز میں اس کے علم بردار بنیں گے. اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم نے بھی ریکویسٹ کی ہے، وزیر خارجہ نے بھی ریکویسٹ کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اسلامک فوبیا کو ٹارگٹ کریں گے اور اسے ختم کریں گے. جی یہ جو بات دونوں وزیر خارجہوں کے درمیان میں ہوئی ہے، یہ بڑی مثبت بات ہوئی ہے، اور اس کے ریزلٹس انشاءاللہ تعالی یونائٹڈ نیشنز میں نظر آئیں گے. بوتھ the leaders have decided to work together to target all kinds of phobia, especially based on racism and other related issues. جی اب یہاں پہ آپ لوکل جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں، اسپیشلی جب ویسٹرن کینیڈا کی بات کی جائے، آپ مختلف آرگنائزیشنز کو کس طرح کا میسج دے رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں؟ اس میسج دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ اس سانحے کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں، اور پھر سمجھیں کہ اس کا مستقبل پہ کیا اثر ہوگا. جو ایکشنز آپ آج لیں گے وہ کل آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی آنے والی نسلوں کے اوپر مرکب ہوں گے. سو کیئرفلی اس کو ڈیزائن کریں، اس کو کیلیبریٹ کریں، اور اس کو کینیڈین پالیسی میٹرکس میں انکلکیٹ کریں ان اے وے کہ اس طرح کا گھنونا واقعہ دوبارہ نہ ہو، تاکہ جو کینیڈین جو ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ فوبیا ہر قسم کا خراب ہی ہوتا ہے. جی آخر میں آپ کے کیا ریمارکس ہوں گے؟ کیا کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میرا میسج کمیونٹی کو یہی ہوگا کہ اکٹھے رہیے، اکٹھے چلیں، ایک دوسرے کا خیال کریں. ہم ملک سے دور ہیں، اکٹھے رہیں، بھائیوں کی طرح رہیں، بہنوں کی طرح رہیں. پلیز اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ سر. Is the traditional and unceded territory of Coast Salish people, specifically the Kwantlen, Etsi, Semiahmo and Wasson First Nations. On behalf of Committee of Progressive Pakistani Canadians, all of us at the organizing body of this event, all the organizations who are supporting this event and standing beside us and with us, I'm here to pay my respect to all the elders of indigenous lands, past and present. I'm Shahzad Nazir Khan from Committee of Progressive Pakistani Canadians. Anti-colonial revolutionary thinker and activist Bhagat Singh once said, if the deaf are to hear, the sound has to be very loud. Yes, very loud. So I would like to start with very loud and clear that I am an unapologetically Muslim, unapologetically brown, and unapologetically South Asian and a Pakistani. Thank you. Showing respect to a tragic event that should never have taken place to begin with. Never in my life have I been so saddened to be a Canadian, considering the events that have happened over just the last 2 weeks. The remains of 215 Indigenous children in a mass grave were uncovered in Kamloops,
And now, an entire innocent family was targeted and brutally attacked in London, Ontario, resulting in 4 deaths, only because they were Muslim. The only survivor being a 9-year-old boy who awake to find no one at his side, no one waiting next to his hospital bed. He's been left all alone in the world because of one man. I think, what if it was my sister in this situation? My 12-year-old sister. What if she was left all alone with no one to guide her throughout the rest of her life? It pains me to think that we must worry about looking too Muslim as we leave the house, considering how progressive and accepting Canada is. In times like this, it doesn't feel right to be a proud Canadian, because things like this wouldn't happen in the Canada I want to be proud of. But things like this happen here in the Canada we live in. They happen in Kamloops, in London, in Nova Scotia, in Quebec. They happen all over this country, and we need to start acknowledging that. We need to take a proper look at the blood-stained soil we walk on. When a family cannot even walk without risking being murdered for how they look, when we can unearth more than 200 dead children almost accidentally, that's when we must open our eyes and really look at this country and its history. Is this what we stand for? Is this what we're meant to be proud of? While we continue to progress and move on, keeping these tragedies in our hearts and in our prayers, we must also remember to humble ourselves. Yes, Canada is a diverse and beautiful country, but Canada has an awful and very real past of genocide, hate crimes, and violence. As a country, it has done a fantastic job making not only the rest of the world, but also us Canadians forget our bloody past. But we must now do our part to remember. To remember the millions of lives Canada has taken since its beginnings as a country, and to honor their memory. To keep the victims in our hearts and in our prayers, and to ensure that nothing of this extent ever takes place again. Because this time it was the Afzal family, but tomorrow it could be our own family. But tomorrow it could be our neighbor's family, or tomorrow it could be our friend's family. We shouldn't be afraid of taking a walk. And it's time we stand together to call for justice, not only for this and the events of the future, but for the bloodshed of the past. May the Afzal family rest in peace, and may Allah grant them the highest level of Jannah. I hope they know that their son is now a younger brother to all of us. Ameen. Thank you. It was very difficult. It was myself, Aisha Khan, Noor Anaya, and Noor Fidel. We are just community members, and we are part of the local advocacy scene. And we came together to organize this as, strong Muslim women voices, because we wanted to find a space to help our community grieve and also express some of their anger, because there is anger and there is grief, and both of those things are very valid. There was very strong words said today, and it's hard, especially as Muslim women, to be grieving and at the same time trying to help other people heal. So it was a very long couple of days, but I am very, very proud of our own Muslim community, as well as our allies who came out and stood with us, and the ones who stood till the very end, because it was quite a long day. And I thank everyone for coming, and I hope to see that continued support as the days pass. This vigil was a bit different, and a lot of women came, and we have seen a lot of women actually raise their voice too. How do you see that, and what do you say about it? I believe that women in most communities are the healers of our community, and they do a lot of the work. Men do the work too, absolutely they do. But I also feel that a lot of times our voices aren't heard, and as Muslim women, especially our hijabi sisters, they're the ones that are the most vulnerable, and their voices are very important, especially when it comes to talking about Islamophobia. My mother is a hijabi woman. I used to wear the hijab, and I can tell you that unless you're a woman, a Muslim woman,
you can't fully understand how terrifying it is to live in a world like this, especially after an attack and a murder that just happened. And we wanted to center around the voices of the women because 3 of the 4 victims were women. And women are constantly targeted in our communities by supremacists, white supremacists, and hatred-filled people. We also did invite some men to speak as well, men who we know, who we trust, who are allies, who are known to us and the community and who support us this entire way. And we're very grateful for their words, as well as our non-Muslim allies who are here as well. So our intention was to do things a little differently. We wanted to invite the indigenous matriarch of this land, the various matriarchs, to gather and, you know, show support because we support them too. And this is a collective battle between a lot of us. And we wanted to do this in the proper way that advocacy should be done, with a collective community effort. So, having said that, we know we do blame a lot of other communities. What do you think? Is there any responsibility for our community? Do you hold our community responsible for some? Not for Islamophobia per se. What I do hold our community responsible for is failing to allow the most vulnerable and the most invisible voices. Our Muslim Ummah needs to be stronger, and I will say this, I'm not afraid to say this, especially the men. The men are supposed to be the protectors of our community, not the ones who speak over us or silence us. There are lots of good Muslim men out there that support us, like the ones that we saw today. We have a lot of diversity in our Ummah, and some of that diversity doesn't align with what a lot of people believe, but we have to recognize that no matter what a person's identity is, whether they are a black Muslim, a revert Muslim, a queer Muslim, a indigenous Muslim, you know, Arab Muslim, Pakistani, whatever your identity is, you are still Muslim. And your voice is important, so it's not okay to shun out the voices of the minorities within our community, of the vulnerable in our community, and it's important to uplift them because that is what makes our ummah so beautiful. It's not our place to judge who practices Islam in what way. It's our place to be open and kind because our Prophet Muhammad ﷺ, he was kind, compassionate towards others, all others. So why can't we be like that? That's how I feel, honestly. At the end, what is your message? My message is that I hope that in our community, especially here in Vancouver and BC, we can build a better future for our youth. Our youth are our leadership. They're the ones that are going to take the baton and take that torch and move forward. If we are not welcoming, if we are not amplifying the voices of the youth and the vulnerable, we don't have a future ummah. We are responsible for bringing them in to Islam, not scaring them away from it. I work with youth, and I can't tell you how many youth I work with who are turned away from Islam simply because they are silenced and not heard. And that's not okay. Our youth are our future, and we really need to work harder to include them, even when they're wrong, because we should be their protectors, we should be their nourishers, we should be their educators, we should be their guides, but we should also listen to them, because our youth are far more knowledgeable than we can ever imagine. Thank you so much. Thank you. मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं तो क्या फीलिंग है आपकी यहाँ विजिल पे? आज बहुत अफसोसदा हूँ और अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने अपने आप को इतना खौफजदा पाया है कि इस ऐसे मुल्क में जो एक आज़ाद मुल्क है जिसको हम ये समझ के आए थे कि हमें यहाँ पर हर तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी, वहाँ पर हमारी इज़्ज़तें और हमारी जानें महफूज नहीं हैं। एक इंतहाई मासूम और एक इंतहाई सिविलाइज जो फैमिली थी उसके 4 लोगों को सिर्फ इसलिए अपने इंतकाम की बेड़ चढ़ा दिया गया कि वो एक दूसरे कल्चर से थे, वो मुसलमान थे या वो एशियन थे या उनका रंग दूसरा था। तो वो एक उसमें मैं भी हो सकता था, मेरी फैमिली भी हो सकती थी, और वो अपनी ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब और अपने कितने ख्वाबों के साथ वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक खातून जो थी मदीहा वो PhD कर रही थी, उनके हस्बैंड एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट थे और 15 साल की एक बेटी उनके स्कूल में थे, उसके कितने ख्वाब हो गए, और एक आदमी ने सिर्फ इसलिए उसके जज्बात को कुचल दिया कि वो उसका रंग दूसरा था और वो किसी दूसरे मुल्क से आया था। और हमें ये सोचना चाहिए था कि वो उसने ये नहीं पता था उसको कि ये पाकिस्तानी है या वो मुसलमान है। वो कोई सिख फैमिली हो सकती थी, वो कोई यहूदी फैमिली हो सकती थी, वो कोई अरबी फैमिली हो सकती थी, वो किसी भी दूसरे कल्चर से हो सकती थी।
بات یہ ہے کہ ہم سب کا خون ایک ہے. جب خون کا رنگ ایک ہے تو ہمارے جو ہیں کس طریقے سے انتقام ہمارے سے کس بات کا انتقام لیا جاتا ہے. میری حکومت سے اتنی پرزور اپیل ہے کہ ایسے شخص کو آپ کسی بھی طریقے سے پروٹیکٹ نہ کریں, اپنے قوانین میں تبدیلی کریں, اور اگر کوئی اس قسم کا حملہ کرے اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرے تو اس کو لائف سینٹینس دیں, کیونکہ اس کے بغیر جب تک کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ یہ جرم کریں گے تو اس کی کوئی سزا ملے گی تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے یہ پریس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اب اس کو کسی کاؤنسلنگ اور کسی سائیکالوجی کے ان کے سسٹم میں ڈال کے اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ ایسا کیا تو یہ یہاں کے وہ تمام لاکھوں لوگ جو دوسرے ملکوں سے اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تھریٹن فیل کریں گے. وہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں, اور اگر پرائم منسٹر ٹروڈو اور ان کی لیجسلیٹر کو اس چیز کا احساس نہیں ہے تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اگلے الیکشن میں ان کو کوئی شخص ووٹ نہیں دے گا. یہ ہم سب اس لیے اس کے ساتھ ہیں کہ وہ ہمارے لیے صرف آپ ایک ٹی وی پہ تقریر کرنے سے یا ایک ٹویٹر کا اکاؤنٹ کھولنے سے آپ کے جذبات ہمارے اس کو فیور نہیں کر سکتے. آپ نے اگر یہ فیور کرنی ہے تو آپ لیجسلیچر پہ جائیں, قوانین پاس کریں, اور وہ 4 وائٹ سپرمسٹ جو گروپس ہیں ان کو بلیک لسٹ میں ڈالیں تاکہ ان کے لوگوں کو تھریٹن فیل ہو. ہماری آرگنائزیشنز کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ہماری آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم لوگ جہاں کے جو لوکل پولیٹیشنز کو ہیں ان کو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ان کو بلائیں, ان کو مائک دے دیا اور ان کے ساتھ پکچر کھنچوا لی اور اس کے بعد ان کو ووٹ دے دیا. میں خود پاکستان کینیڈا ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں, اور میں یہ اپیل کرتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں سے, پاکستانیوں سے, سکھوں سے, اور اپنے جو دوسرے کہ آپ پولیٹیشنز کو ان کو دیکھیں کہ اگر کوئی اس قسم کا بیان آتا ہے ان کا کس قسم کا رویہ ہے. کیا وہ جا کے قوانین کو چینج کرنے میں کوئی مدد کرتے ہیں, یا وہ صرف ایک فوٹو آپ کے لیے آپ کے فنکشنز میں آتے ہیں, آپ ویڈیوز بنواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. کشمیر کے واقعات ہو رہے ہیں, فلسطین کا واقعہ ہو رہا ہے, ابھی یہ واقعہ ہوا ہے. زندگی جو ہے وہ کسی کی بھی قیمتی ہے, چاہے وہ فلسطینی ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے وہ سکھ ہو. ہر شخص کو اپنے خیالات رکھنے کا حق حاصل ہے, یہی آزادی ہے یہاں پر. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کسی کے جذبات کو کچلنا کوشش کرے گا کہ وہ شخص ایشیا سے آیا ہے, وہ شخص انڈیا یا پاکستان سے آیا ہے, تو اس قسم کے قوانین کی یہاں پر ضرورت ہے کہ وہ تبدیل کریں اور ہماری جو اس قسم کی جو نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام ہیرا جہانگیر ہے اور میں یوتھ ڈائریکٹر ہوں بی سی برٹش کولمبیا میں. آج ہم یہاں سب مسلمز, بلکہ ناٹ اونلی مسلمز, اور بھی بہت سے کلچر اور اسکن کلر کے لوگ یہاں پر شامل ہیں جسٹ ٹو شو آور سپورٹ فار دا ہارفک ایکسیڈنٹ ہیپن a week ago in London, Ontario, where the family was just they went for a walk and they were brutally killed just because of their faith. This world needs peace and healing, and that's not going to happen with this hatred. We need to bring end to this violence and this hatred. We need love and peace. Let's support each other and let's end all this hatred. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I greet you with the greeting of Islam. Subhanallah. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. The events that just happened recently, we're all very familiar with. You heard it on stage, you heard it in the news, you heard it from others. I still can't get my head around it. I absolutely still can't get my head around it. The heinous crime that's plainly a terrorist attack on just passerbyers. It left me wondering and asking myself as I was driving here, will my walk with my family, because literally they took a picture out of my own family. I could have been them. Truly, I could have been them, or you could have been them, la qaddar Allah. This is just astounding to understand that it's just because of hate. He didn't know them. It's not like they did something to him. No. And not only that, he could have been wrong, because everybody looks alike, right? In terms of attire, in terms of everything. So he could have just ran over people that he thought that he hated, whereas they're not even who he thinks they are. It's amazing, because it tells me something. It tells me that hate is so powerful, and we have to deal with it at its heart.
नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे अंटारियो की जो लंदन की फैमिली है, हम उसको सपोर्ट के लिए आए हैं और बहुत दुख हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के और उस बच्चे के जो अभी बीमार है उसके साथ हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए और सब जिनकी डेथ हुई है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। महनाज, आप क्या कहना चाहेंगी? दुख तो बहुत ज़्यादा है कि उसका तो कोई मतलब हम वर्ड्स नहीं है हमारे पास के डिस्क्राइब करें, लेकिन ये बात अच्छी है कि यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं और हमारे दुख में मतलब हम सब के साथ शरीक हुए हैं, तो इस बात से थोड़ा अच्छा लगा है कि शुक्र है कि मतलब हम सारे इक्वल हैं इसमें और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो हमें चाहिए कि हम अब मतलब हाथों से हाथ मिला के और इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो बस यही है, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत करे और जो बच्चा है वो तो सब अपना खो चुके हैं, लेकिन हमें है कि हम सब उनके माँ बाप हैं, वो हमारा बच्चा भी है, हमारा भाई भी हैं, जो भी हैं, तो अल्लाह बस उसकी ज़िंदगी आसान करें, उसके लिए कोई मुश्किलात ना लेके आएँ, जो है उसको कम करें। In the great words of my mentor and in the great words of someone I truly look up to, Al-Malik al-Shabazz, aka Malcolm X, he says, a man and woman who has nothing to stand will fall for anything. A man who has nothing to stand for will fall for anything. Today, I urge you, if you don't know about Islam, learn. Because to educate the mind is to educate your heart, and then you and everyone around you will be educated. Plain and simple, that's just how the cookie crumbles. We cannot be protesters for clout. We cannot be protesters for the sake of it's a nice picture just to show that we're here. No, to protest is to learn, and to learn is to protest. So if you don't know about the religion that 1.6 billion people practice today, learn. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਪਿਓ ਗਵਾ ਲਾਸਟ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਹਨਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੀੜਾ ਪਤੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ Oh, it's a very emotional time. You know, the very beautiful speakers. He never wanted me to wear the hijab. You know, here we had a lot of our sisters speak, because he did not want me to be targeted. Their daughters, their I thought that could children, not be true. And so I they have spoke a poem from the heart. And they expressed, you know, their feelings and also anger their anger and their rage and that we all feel. For the and community. you know, this is a family. To anyone who has judged a culture based on what they read in an article, I challenge with you all of us. to talk to a stranger who wears the clothes family, as family, you so quickly confuse with danger. Family, and we're all here together as to a those family. who scrunch and their nose if you look at customs here, that are a little too unfamiliar, Muslim, but you see people from every race, from when every was culture, the last time you experienced people, a Persian South New Asian Year people, Asian with a people, half scene like spread out and children playing everywhere? And brown people to the and black people all who together ask to go and about bear witness and to say that yes, we are one, and that whatever happened, it's what an aberration and it's wrong. But the other reality is that last time I checked, violence we were typecast as villains, while you mispronounced our names just and to we have be to funny. recognize it, acknowledge it, to the people in their homes, judging through the windows. You all as both visibly brown and visibly Muslim. I am unapologetic for either of those things.
I am a 5th generation Punjabi settler on stolen Coast Salish lands. I grew up hearing about the racist stories of my descendants and the things that they had to endure in order to survive. I now, sadly, have a growing collection of my own stories of racial misogyny and Islamophobia. Oftentimes when I share these experiences, folks feel uncomfortable and a little unsure of what to do. They offer kind words and remind me that they are an ally or in solidarity with me and the communities that I represent. I've heard that word, solidarity, being used and misused, and I thought I would end out tonight with the piece sharing what solidarity means to me and how we as a collective here today could implement it and action next steps moving forward. Solidarity is a verb which relies on ongoing actions. It's based on mutual aid and care for society's most vulnerable in the pursuit for equity and justice. Solidarity requires sustained commitment, strategy, and social and financial support to keep our causes moving forward together. अच्छा, जब न्यूज़ ये सुनी, हम आज इकट्ठे हुए हैं विजिल के लिए, ये तो आपको पता ही है, और हमारा मकसद ये है कि सॉलिडारिटी शो करना, इकट्ठे होना और एक मैसेज अक्रॉस द बोर्ड देना। जब ये न्यूज़ सुनी तो आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत हर्ट हुआ था। 2 दिन तक आई फेल्ट कि देयर इज़ अ नीड टू डू समथिंग, क्योंकि आपके दिल को दुख होता है। उससे पहले इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का जो एक वो सामने आया 215 अनमार्क्ड ग्रेव्स जो अनकवर हुई, वही एक शॉक था। उसके बाद जब ये हुआ आफ्टर लाइक नॉट लॉन्ग अगो, दोनों में गैप इतना नहीं था, और ऐसे लगा जैसे हमारे साथ हुआ है, और वाकई हमारे साथ हुआ है, क्योंकि दिस कुड बी अस। मैं अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, हस्बैंड, वी ऑल गो फॉर अ वॉक। तो ये बिल्कुल हमें डजंट फील राइट, इट शुडंट बी राइट, और जो है वो एक आपको पर्सनल फीलिंग होती है। तो उसके बाद मैंने अपनी फीलिंग भी शेयर की कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, सब लोग एग्री करते हैं, और जिसकी वजह से एक्चुअली वी स्टार्टेड शेयरिंग। और फिर हमने कहा कि हमारे तरह और भी लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं, जो अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं। हमने ये विजिल का जो रखा है, वो उसकी रीज़न यही है कि हम इकट्ठे हों और अपना दुख बांटें। पहला मकसद तो ये है कि इकट्ठे हों और दुख बांटें। फिर दूसरे और भी मकसद हैं कि एक तो वॉइस रेस करना मीडिया में, गवर्नमेंट लेवल पे, और उसके अलावा गवर्नमेंट को एक्शनेबल आइटम्स के लिए डिमांड करना, रिक्वेस्ट नहीं, डिमांड करना, क्योंकि मिनॉरिटीज़ के साथ जो होता आ रहा है अब तक वो सही नहीं है। आई थिंक अभी टाइम है, अभी टाइम आ गया है कि हम इसके ऊपर एक्शन लें। हम सिर्फ बातें नहीं करें, हम इसके ऊपर एक्शन लें। और आज जो मैंने ये हेड स्कार्फ किया है, मैं नॉर्मली नहीं करती, लेकिन मैंने आज किया है। क्योंकि बिकॉज मैं अपनी एसोसिएशन, बीइंग अ मुस्लिम, आई वांट टू शो दिस एसोसिएशन प्राउडली, और इसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं कैसा ड्रेसअप करती हूँ या कोई भी कैसा ड्रेसअप करता है, उसके स्किन का कलर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, इसकी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं सही है। और कनाडा जैसे मुल्क में जो कि ऑलरेडी इतना मल्टी कल्चरल है, आई थिंक ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। और इस चीज़ को हम रेज़ करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। अफजाल फैमिली के हम सब दिल से बहुत दुखी हैं, और उनके लिए हमारे लिए दुआएं हैं। हमने बल्कि आज एक मैसेज बोर्ड भी रखा है कम्युनिटीज़ के लिए कि वो अपना मैसेजेस लिखें अफजाल फैमिली के लिए, और वो हम बोर्ड जो है वो उनकी फैमिली को हम गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। जब भी हमारा उधर विज़िट करेंगे हमारी फैमिली के मेंबर वहाँ भी, या फिर जो कौंसल जनरल भी आ रहे हैं, तो कोशिश ये है कि हम उनके ज़रिए गवर्नमेंट लेवल पे एक इनिशिएटिव लिया जाए कि उनको ये फॉर्मली गिफ्ट किया जाए। मैसेजेस जो हैं वो कम्युनिटी के पर्सनल मैसेजेस उस मैसेज बोर्ड के थ्रू उनको दिया जाए। उसके अलावा हम एक रेजोल्यूशन भी आज हम साइन करवाएंगे, जितने भी अटेंडीज़ होंगे उनसे वो रेजोल्यूशन साइन करवाएंगे, और वो फिर हम प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडर्स के सामने, ताकि एक वॉइस, इकट्ठी एक वॉइस जो है वो प्रेजेंट की जाए। Thank you, sorry. Thank you so much. Well, first of all, it is an incredible tragedy, and it's absolutely beautiful to see the people that are joining us here today to remember this wonderful family, to see the solidarity behind the community here. And what I really hope for is that we can truly find a way to get past this, a way to make relationships between each other better and stronger.
Well, I think the most important thing is that we as government ensure that we are working to find the ways that we can unite together, not divide each other. It's so important that we really and truly see each other as equals, and we work more and more to ensure that we are all in the same. We're all in the family of humanity, and we need to treat each other that way. Tamara, we have seen you were trying your best to have interfaith meetings, and you tried to get everybody on the same page. Do you think today there is a need for that? Even there's a more need for that? Absolutely. Today there is more and more need for us as faith community to come together, to get to know each other, to understand each other better, so that we can build bridges between us and show love to each other. Because again, we're all part of the family of humanity, and together as faith communities we can do that. Yeah, we've seen this story play out before in front of our eyes. We've seen it in other parts of the world. We've seen it on our soil here in Canada. It's getting closer. It's getting more brutal. And all we hear is platitudes. We hear platitudes from our representatives in the legislature. We hear platitudes from our representatives in the House of Commons. And no one wants to deal with it. So my question is, how many more Muslim bodies need to pile up before people think it's appropriate to take some action and to combat this hate? Naveed bhai, ये कोई ऐसे वैसे नहीं हुआ. ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं आज, इनकी जो responsibility है ना, ये पॉप, हमारी जो पॉप कल्चर, नॉर्थ अमेरिकन पॉप कल्चर, जो 2001 से जो शोज शुरू हुई हैं, Hollywood में, Homeland is one example. They feature Muslims as the other. They feature Muslims as the demon, as the enemy. It's an us versus them. So young kids that are consumed with internet, consumed with online access, that's where they're learning this stuff from. So this government in Ottawa set up a digital government for the first time ever. एक पूरी डिपार्टमेंट बनी गई थी डिजिटल गवर्नमेंट की. उन्होंने किया क्या है? हम इस मुल्क के हिस्से नहीं हैं, हमारी इधर जगह नहीं है. सोचा जाए तो हमारी सारे जो हम बाहर से आए हैं ना, हम इधर ऑक्यूपाइड लैंड में आए हैं. ये टेरिटरीज जो है ना, ये अनसीडेड टेरिटरीज है. हमारे जो फर्स्ट नेशन लोग हैं, जिनके बारे में हमारे लोगों को भी नहीं पता, हमारे बच्चों को भी नहीं पता. और we need to educate ourselves about them too. Or we need to educate each other about who we are, what our beliefs are, what our systems are. हमारी जो similarities हैं, ये चीज़ें मस्जिद में नहीं सिखाई जाएंगी, ना घरों में. We need to get out and meet. We need to build relations with our. ये जो हम कर सकते हैं as citizens, हमारा भी रोल होगा इस चीज़ को बीट करने में. जो गवर्नमेंट का रोल है वो तो गवर्नमेंट का रोल है ही है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी एजुकेट them and help them and aggressively push them, because if we don't, they won't do it. They will only respond to things that are happening at the moment. And I don't want to have these conversations. Naveed bhai, it's draining, yaar. It's draining when you hear about a family being plowed down by a truck. And I think about my children, and I don't want to let them go outside and play because I'm afraid. This breaks my heart. We must do better. We need to come out and we need to educate, build relations in your neighborhood, in your cul-de-sac, on your street, understand one another. This is the only way we're going to beat down, in our own way, this bigotry, hatred, racism, and violence and terrorism that is focused on us. It's on us to do it, but we also have to hold our elected people to account and make them earn their keep. It's us who are paying their salaries. We need to make sure they earn their keep, or we need to boot them out. Simple as that. Bilal, as you have spent a lot of time in this this society and in a political arena, do you think things are changing?
things are changing in certain areas, Naveed bhai. Things are reverting back to the struggles that maybe my father had once upon a time. And could they be better? Of course they could be better. They should be better. But it's 2021 and we are dealing with racism at a level we have never seen in this country. So from that perspective, Naveed bhai, मैं सोचता हूँ कि चीज़ें हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं हो रहे. बंदा कंफ्यूज हो जाता है सोच के कि 2021 में वो रेसिज्म जो हम मेरे बाप ने नहीं देखी वो हम आज विटनेस कर रहे हैं इधर. So Naveed bhai, I think if you were to ask me according to smaller pieces, I could give you a very defined answer. But according to me, on a larger level, racism, bigotry, hatred, it is at its strongest point in recent history in Canada. Well, I'm here to join the community. I know it's a very challenging time when we have these acts of hate and terrorism in our country. We have to stand up against Islamophobia and any hatred of any kind in our community. And I believe that as we come together, offering our condolences to those family members in London, Ontario, those that strike down this family is very tragic. And I know that it is very surprising that we need to continue to stand up against these acts of hatred and violence. And we cannot tolerate this in our communities across this country. So I know it's a very somber occasion this evening, but I do think it's these moments in time that bring us together as a community to reflect on how we need to have a more inclusive community and support each other. So I'm grateful to be here to stand with others here in the community. You know, we've seen so many acts of intolerance in so many different ways, whether it's people of different racialized communities, ethnocultural communities. We need to obviously continue to work on the reconciliation in a very true way with Indigenous peoples, and the tragic discovery of the 215 unmarked graves of the children at the Kamloops Indian Reserve residential school was a real challenge there as well, and that's very traumatic to so many across our country, particularly Indigenous peoples. We have a lot of work to do together, and it does go beyond just words in terms of how do we continue to build a more inclusive community. That includes ensuring that in our education system we educate our young people and others so they come through our communities about the history of this country and some of the other systemic racism challenges in our country. Obviously we've seen the rise of anti-Asian hate during this period, and we've seen many other acts of hate against Muslims, Sikhs, Jewish people in our communities. In my riding of Vancouver Langara, I know the Muslim community was very supportive, let's say, of the bomb threats against the Jewish Community Center. I was very heartfelt when I saw members of the Muslim community come out a number of times to support the Jewish community, and I know the Jewish community has reciprocated that support when the New Zealand Christchurch killings happened as well. But I do think that we need to come together in a stronger way to look at our education system, to look at our resources, to report acts of hate, to ensure that we are doing that, to support law enforcement in terms of prosecuting any of these situations and incidents. We need to do more than be bystanders in these situations, and we need to continue to support each other as we come forward. It's transcending communities, but not just between the Muslim community that's been targeted, but specifically Islamophobia in this country can't be denied any longer. The kind of like lip service that we receive from like politicians, the kind of non-commitment we get from like governments, consecutive governments around fighting this, and the inability of the media to kind of show this in like a way which is actually going to be educational towards the people versus kind of like vilifying communities which they've traditionally done. So I think the feelings towards it are also obviously the sorrow that comes into poor people losing their lives, a young child being left kind of like familyless afterwards, which is like horrifying. And then on the other side, there's anger and frustration. We've seen this for decades now. This isn't something new. We shouldn't be surprised. All we should be looking at right now is that there's certain pieces of the media, government, right-wing politics that's allowing this type of hatred to not come forward and show itself. And that's where we have to be vigilant as visible minorities, especially, I would say, especially the Islamic and Sikh community, as very visible minorities in the way we present ourselves, in the way we are seen.
that we are targets everywhere we go. A family of 4 walking down the street. It could have been a family of 4 in Surrey, it could have been a family of 4 in Edmonton or Calgary or anywhere for that matter. It could have been a Sikh family, it could have been a Hindu family, it could have been a Muslim family, and it was a Muslim family. And the fact that even till now the media hasn't come out to call this what it is, which is like an act of terrorism. They keep going towards pushing this towards hate. When you single this out as an act of hate, it actually makes it singular in nature. The person that committed it is kind of like alone or solely responsible. This isn't a solely responsible act. These types of acts have been happening for decades against these minority communities. This is a problem of white supremacy that nobody wants to deal with. And now the communities that are getting together today and all across Canada right now, I think enough is enough. That we don't need our politicians to be our friends. We don't need them to come to our parties or anything like that. What we need is accountability. We need tougher laws. We need people to actually come out and say that white supremacy will be rooted out of this country. When you have issues around the indigenous community, they become the problem. Muslim community, they become the problem. Palestinians are the problem. Sikhs are terrorists, they're the problem. But when it comes down to a single white male, and it's not a single white male, when you collectively look at where this violence is coming from, this violence coming from that community, and it's premeditated in this case and many other cases as well, it just goes to show that there's such a huge problem, but the media will call it kind of like a singular act that came out of nowhere. And it's for us minority communities to understand this isn't out of nowhere, that we have to look over our backs all the time. When we're walking down the street with our families, we have to look and watch and approach people in a certain way. That this type of like feeling unsafe here is like, I don't know how long we can go about in this country trying to prove to people that we're just as belonging to be here as they are. This is indigenous land, especially in BC, it's unceded territory. So we have as much right to be here as anyone else, aside from the indigenous community. So that's how I'm feeling right now. I come to you from the unceded lands of the Kwantlen, the Katzie, the Semiahmoo, and the Kakite. And if you don't know where that is, unfortunately, because you've been, I wanted to say that really conditioned that way, that's Surrey. Protest I want you to using your loudest voice to uplift the words it's going to be of the young 15-year-old who is no longer with us. To stop giving lip service and so repeat after me. Actual amendments. Learn. We see politicians lead. Continue to inspire. Talk about, learn. Problems with lead. Islamophobia, inspire. Racism, hate, but nobody those are takes also words on the mural. Action. That she made. So my speech is based on her words tonight. And I promise I won't be too long, but some things need to be said. These atrocities. And I'm going to jump a little bit. I'm going to go to the lead part first. What's happening in Palestine. You cannot call yourself a leader, and I'm not going to waste my breath naming names. I speak of all leadership from our mosque. Naveed bhai, सारे बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, हार्ट ब्रेक्स, क्योंकि उनमें हमारे अपने बहन भाई हैं, बेचारों ने कुछ भी नहीं किया था. It was such a wastage of 4 generations, 3 generations. 4th one जो बच गया उस बेचारे का पता नहीं क्या बनेगा. बात सारी यही आ जाती है कि ये फंडामेंटलिज्म जो इस्लाम के अगेंस्ट उसका शुरू हुआ है, हम लोगों को रियली उसकी रूट्स को जाना चाहिए. ये हम लोगों का सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तानियों का इस वक्त प्रॉब्लम नहीं है, ये इस वक्त प्रॉब्लम है इस वक्त कनाडा के अंदर. ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई है, तो इसके ऊपर बहुत सोच विचार की ज़रूरत है. पाकिस्तानी बैकग्राउंड के हों, मुसलमान या दूसरे मुसलमान हों, और खुसूसन जो पिछले 3 अनफॉर्चुनेटली वाक़े हुए हैं वो सारे पाकिस्तानी बैकग्राउंड के मुसलमान थे. बहरहाल बात सारी करने की है कि इट इज़ टाइम कि भाई वी शुड ऑल गेट टुगेदर एंड स्पेशली द गवर्नमेंट एंड ऑल आवर रिप्रेजेंटेटिव से दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, दे नीड to figure out what's going on, why this fundamentalism is on the increase, why this fundamentalism is changing into terrorist acts. और सबसे बड़ी बात ये कि we need to get together and we need to have people who really matter and who really have the resources to find out the reasons as to why this fundamentalism is going. All those kids and all those people who they are meeting, who they are watching, and वो जो है कि वो websites पे सारा कुछ post हो रहा है. Who are those people who are posting those things on the website? So it is a very crucial time. We should learn. I hope we are not standing here after a year repeating the same thing. लेकिन this is the time that the existing governments of all the levels, provincial government, city government, federal government, सबको इसके ऊपर सोच विचार करनी चाहिए. And they should really figure out कि भाई ये कौन लोग हैं जो हेट्रेड फैला रहे हैं, कौन लोग हैं ये जो मीडिया के ऊपर ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं,
जिसकी वजह से हमारे जो इनोसेंट पीपल हैं दे आर टर्निंग इनटू टेररिस्ट। तो थैंक यू कि आज सारे यहाँ पे जमा हुए हैं और वी आर रिमेम्बरिंग दोज, और फेसबुक पे उनके लिए गो फंड भी शुरू किया गया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वट एवर यू कैन अफोर्ड ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਮੋਸ਼ਨ M103, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਓਟੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਵਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਈਵਰਸ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ और बहुत बड़ी अन्याय जड़ा है ये हुआ है। थैंक यू वेरी मच। देखें जी, जैसी फीलिंग्स तो एक इतनी गंभीर फीलिंग है जिसका बात बताने से अंदाज़ा तो नहीं हो सकता। आपको पता है कि इतना बड़ा सान्या हुआ और एक फैमिली के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसमें यंग बच्चे भी थे और माशाल्लाह वो एक फैमिली, मैंने तो इसको इस तरीके से फ़ील किया है कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और कोई आदमी आकर मुझे बेगुनाह कत्ल कर दे तो मैं तो इस तरीके से इसको फ़ील करता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तमाम लोगों ने इसको इसी तरीके से फ़ील किया होगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है जी। और ये मुस्लिम हिस्ट्री में इधर कनाडा जो है ये पीसफुल कंट्री है, इसमें इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बड़े कम होते हैं। लेकिन मेरी यहाँ से गुजारिश है गवर्नमेंट को भी कि देखें, ये हमारे साथ पहली दफ़ा ये वाक़या नहीं हुआ, हमारी मॉन्ट्रियल मस्जिद में भी पहले ये वाक़या हो चुका है और उसमें भी कितने लोग कत्ल हो चुके हैं और उनका भी कोई अभी तक कोई चीज़ जो है वो किसी पाया तकमील तक नहीं पहुंची। और दूसरी मैं यहाँ से बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात की कि ये जो इस्लामिक फोबिया का जो नाम है इसको प्लीज़ हटाया जाए और इसको बिल्कुल लीगली तरीके को इसको बंद किया जाए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें जो एक डर पैदा हो रहा है। हमारे बच्चे जो हैं वो एक अपना रिलीजियस कपड़े भी पहनते हैं, हैट भी लगाते हैं, और हमारी बच्चियां जो हैं वो स्कार्फ भी पहनती हैं, जिसके बगैर हम नहीं रह सकते। ये हमारे मज़हब का भी एक हिस्सा है, हमारे कल्चर का भी एक हिस्सा है। और अभी किसी कॉर्नर के ऊपर हमारे बच्चे भी महफूज नहीं हैं और हम भी महफूज नहीं हैं। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है जी कैनेडियन गवर्नमेंट के आगे कि इसके लिए कोई सख्त किस्म का इक़दाम जो है वो उठाया जाए। और मरने वालों के लिए आज जुम्मे का दिन है और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत इस किस्म तमाम इंसानों की, मैं यहाँ मुसलमानों की नहीं, मैं तमाम इंसानों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए। यहाँ वड़ाइच साहब आपने माहौल पूछा तो देख लें कि माशाल्लाह लोग किस कतार से आ रहे हैं और किस तरह पूरी कम्युनिटी जो है, पूरे लोग जो हैं, हर मज़हब, हर कल्चर, हर फेस, हर कलर में आ रहे हैं। तो माशाल्लाह जी हम दुआ को कर सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं गवर्नमेंट से। बहुत शुक्रिया। Responsibility of each one of us, as well as more collectively to be addressed by our government, whether that if we accommodate hate and hate messages, that can grow into the types of things we're seeing today. We've got to do battles to ensure that doesn't happen. Well, on the government level, I think that we have to explore the whole notion of hate and hate crimes and all of that means, and whether or not that means we believe in free speech, and free speech is an important thing, but when free speech becomes hate speech, then we have to step into and ensure that that doesn't happen, because that often leads to exactly the type of things that we're seeing and the challenges that presents.